I've had long hair since 2019, and in the past few years, I've faced every single hair problem that you can imagine. Thin hair, dry hair, dandruff, oily scalp, even heavy hair fall. But the good part is, I've also found the solutions to every single one of these problems, and they're way simpler than you might think. Because when it comes to hair, it's not about doing everything, it's about doing the right things consistently. And I've spent years figuring out what actually works and what does not. So in this video, I'll give you the solutions that I have found to every major hair problem. It doesn't matter if you have long or short hair, this video applies to everyone. These are the solutions that actually work in real life, not just on Instagram ads. And the most common problem that they target is probably thin hair. So let me quickly tell you the solution to thin hair, then we'll move on to dry hair, dandruff, oily scalp, and then hair fall. And by the way, hair thickness does depend on genetics a lot, but not 100%, so there is still room for improvement. Thin hair is probably the most common hair problem that people suffer from, and this tiny scalp massager tool will be your best friend. Long or short, तुमने बहुत सारे ब्रांड्स से बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करे होंगे अपने बालों को थिकर, फुलर बनाने के लिए, but instead of that, your hair just lays flat with no volume and no life. वो बस चिपके रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा बाहर के होते हैं, शैम्पूज, कंडीशनर्स, सीरम्स, पर थिन हेयर की प्रॉब्लम एक्चुअली बॉडी के अंदर से होती है। एंड आई नो दिस क्योंकि एक टाइम पे मेरे बाल भी ऐसे ही थे। वो लंबे जरूर थे बट दे वर थिन एंड लाइफलेस। और मैंने सोचा कि बेटर शैम्पूज और हेयर थिकनिंग सीरम्स विल हेल्प, but they never did. Until I learned what was actually missing, the blood flow to the head. Most people think using a thickening shampoo or applying more oil will fix their hair. But the real reason their hair stays thin is because their roots are not getting enough blood supply. So that's where this scalp massager comes in. ये एक बहुत छोटा सिंपल सा टूल है जो बहुत आसानी से तुम्हारे हेड में ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देगा, so that your roots get more nutrients and more oxygen. ये कोई बहुत टाइम और मेहनत नहीं मांगता और ना ही ये कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, और इसको यूज करना भी बहुत आसान है। तुम्हें इसे बस दिन में 2-3 बार यूज करना है, 2-3 मिनट्स के लिए, ideally for 5 minutes, and you'll feel that warm tingling sensation as the blood flows to your head. That is growth in action. And you know the beauty of this? You don't need anything fancy to increase the blood flow in your head, not even this scalp massager. अगर तुम अपने फिंगर टिप से भी मसाज करोगे तो भी तुम्हारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग थिकर हेयर अगर हर वॉश के बाद तुम्हारे बाल रफ और ड्राई हो जाते हैं? सो लेट्स फिक्स योर ड्राई हेयर, एंड द सॉल्यूशन इज वे सिंपलर देन यू मे थिंक, और इसके लिए भी तुम्हें कोई बहुत फैंसी प्रोडक्ट खरीदने की कोई नीड नहीं है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद हेयर इज इट गेट्स ड्राई। छोटे बाल स्टाइलिंग की वजह से ड्राई हो जाते हैं और लंबे बाल एजिंग की वजह से। एंड इवन दो यू कैन मेक इट लुक हेल्थी वेरी इजीली यूजिंग ऑयल, ड्राई हेयर पे सिंपली ऑयल लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सी द थिंग इज, अगर तुम ड्राई हेयर के ऊपर कोकोनट ऑयल भी लगाते हो तो भी वो ड्राइनेस को ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ ड्राइनेस को ढक देगा। रिमेंबर, ड्राइनेस इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर, not due to lack of oil. I've been there too, especially in winters. मेरे बाल हमेशा ड्राई रहते थे और स्कैल्प हमेशा ऑयली। मैं पर्सनली अलग अलग शैम्पूज और सीरम स्विच करता रहता था in hopes that they'll fix my dry hair. But naturally nothing worked. और जब मैं ऑयल लगाता था तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी लगते थे। The reason being, या तो मैं अपने बालों को प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं कर पा रहा था, या फिर उस हाइड्रेशन को प्रॉपरली अंदर लॉक नहीं कर पा रहा था। और जितनी भी वीडियोस मैंने देखी ड्राई हेयर को ठीक करने के लिए, उन सब ने यही बोला, जस्ट अप्लाई कोकोनट ऑयल टू द एंड्स एंड यू विल बी गुड। सो आई जस्ट kept switching shampoos and conditioners endlessly until I found the actual way to use coconut oil to lock the moisture inside my hair. You see, the only oil that can penetrate your hair shaft instead of sitting on the top is coconut oil. So instead of applying coconut oil on dry hair, apply it on slightly damp hair. या इससे भी अच्छा होगा अगर तुम पहले कोई मॉइस्चराइजिंग सीरम लगा लो अपने डैम्प हेयर पे और फिर उसको लॉक कर दो यूजिंग कोकोनट ऑयल। दिस वे इट ट्रैप्स द मॉइस्चर इनसाइड, मेकिंग योर हेयर सॉफ्टर एंड स्मूदर नेचुरली आफ्टर एवरी वॉश। बट यू नो, योर स्कैल्प प्रोड्यूसेस मोर एंड मोर ऑयल द मोर यू वॉश इट, और इस ऑयल की वजह से हो जाता है डैंड्रफ, दोज व्हाइट फ्लेक्स विद अनबेरेबल इचिंग, that is dandruff. But the good news is, this problem is by far the easiest to solve. All you need is a good anti-dandruff shampoo. Sometimes, even when you keep everything clean, your scalp starts itching and those white flakes appear again. That is dandruff. Or one way or the other,
ड्राइनेस की वजह से ही डैंड्रफ होता है। एंड द ओनली थिंग यू विल नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज अ गुड एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद इंग्रेडिएंट्स लाइक कीटोकॉनिजोल। नो मैटर व्हाट यू डू, ऑयल, वॉश, रिपीट, ये टाइनी फ्लेक्स ज्यादातर तुम्हें अपने हेड पे देखने को मिल जाएंगे। आई हैव डेल्ट विद दिस फॉर ईयर्स। इवन आफ्टर वॉशिंग ट्वाइस अ वीक मेरा स्कैल्प बहुत हैवी लगता था। Itchy skin, oily roots, those white flakes, it was frustrating. और मेरी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब इसलिए होती जा रही थी क्योंकि मैं इस सिचुएशन को ज़्यादा वॉश कर करके ठीक करने की कोशिश कर रहा था, which only made it worse. Most people think dandruff is just dry scalp, पर एक्चुअल में ये एक बिल्डअप होता है एक्सेस ऑयल और फंगल का। सो ऑयलिंग मोर और वॉशिंग मोर विल ओनली मेक द सिचुएशन वर्स। The only real fix is to use an anti-dandruff shampoo once or twice a week. तुम किसी भी ब्रांड से कोई भी anti-dandruff shampoo यूज कर सकते हो। Just look for the ingredients like ketoconazole and zinc parathione. These directly kill the dandruff-causing fungus. But your scalp can still get oily. Oily scalp और dry scalp की problem बिल्कुल opposite है, but luckily we can solve both of them at the same time. Oily scalp की situation बहुत ज़्यादा annoying होती है, चाहे तुम्हारे लंबे बाल हों या छोटे। But luckily all we need to deal with this situation is a wooden comb. तुम सुबह वॉश करते हो तो तुम्हारे बाल परफेक्ट दिखते हैं और शाम तक वो वापस फ्लैट ग्रीसी हो जाते हैं, sticking to your forehead again. जब मेरे साथ ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने ज़्यादा वॉश कर करके अपनी सिचुएशन और ज़्यादा खराब कर ली थी। Because the more you wash your scalp, the more dry it gets and the more oil it produces to compensate that dryness. So you get stuck in this loop जिसमें से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है if you don't take care of your habits and make the same mistakes again and again. The mistake is we ignore how our scalp distributes the oil. So while everyone is suggesting to wash your head more or use some sort of oily scalp shampoo, I suggest you learn to spread this oil properly. क्योंकि यही ऑयल जो तुम्हारा स्कैल्प प्रोड्यूस करता है तुम्हारे बालों के लिए बेस्ट ऑयल है। Nothing available on the market can compete with this. And that is exactly where this simple wooden comb changes everything. Wooden comb तुम्हारे स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को हेयर एंड्स तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके स्प्रेड कर देगा, keeping your scalp fresh and your hair naturally conditioned. But no matter how many times you comb your hair, अगर हर बार comb में दो तीन बाल आ रहे हैं, then don't think it is a severe hair fall situation. पर इस सिचुएशन को बेटर करना पांचों प्रॉब्लम्स में से बाय फॉर सबसे आसान है। इसमें तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी। All you need is good hair multivitamins. Hair fall may sound a very stressful problem, but believe me, in most cases it is caused due to some sort of deficiency in the body. So all you need is good hair multivitamins. दिक्कत ये है कि जब किसी इंटरनल डेफिशिएंसी की वजह से हमें थोड़ा सा एबनॉर्मल हेयर फॉल होता है तो हम उसका रीज़न आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और अपने जेनेटिक्स को दोष देके बैठ जाते हैं या फिर अनाब शनाब एंडलेस प्रोडक्ट्स यूज़ करके ट्राई और टेस्ट करके देखते हैं। But of course, naturally, nothing works in this situation. The first time I started taking hair multivitamins, मुझे पता तक नहीं चला था कि मेरा hair fall कम क्यों हो गया until I stopped taking them. So while most people suggest and look for some magical hair fall control product, I suggest you treat your inner problems first. Hair multivitamins तुम्हारी बॉडी को exactly वो चीज़ ला के देंगे जिसकी तुम्हारी बॉडी को नीड है to grow new and better hair. Biotin, zinc, folic acid, even DHT blockers. It supports everything else that you're already doing. Oiling, washing, massaging, and makes your roots healthy and strong from within. So now you know, thin hair, dry hair, dandruff, oily scalp, even hair fall. Each one has a fix simpler than you think. The trick is to understand what your hair actually needs, not what every ad tells you to buy. To recap, thin hair needs more blood flow, dry hair needs more moisture, dandruff needs an anti-dandruff shampoo, oily scalp needs wooden comb and less washes, and hair fall needs hair multivitamins. पर अगर तुम्हें देखना है कि मैंने कैसे इन पांचों चीजों को अपने रूटीन में डाला हुआ है, you can watch this video next. Your hair doesn't need 20 different products, just 5 good habits that you can stick to. Always remember, I love you.